हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड। वेलकम बैक टू द क्लास। और अभी हम लोग क्लास करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री विच इज चैप्टर नंबर 8 ऑफ मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10। ओके, फर्स्ट विल हैव अ क्विक रिकैप। दैट इज हमने लास्ट क्लासेस में क्या किया था। इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या किया था कि हाउ टू measure the height or the distance of the object which cannot be measured with the normal scale। ठीक है, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था कुतुब मीनार का। एंड वी आल्सो हैड एन एग्जांपल ऑफ अ रिवर एंड द हाइट ऑफ द पुल और द टेम्पल। उसके बाद और एक एग्जांपल था, दैट वाज ऑफ अ पैराशूट। ठीक है, उसके बाद देन वी स्टडीड कि ट्रिगोनोमेट्री वर्ड कहाँ से आया। ट्रिगोनो इज राइट, गोनो मीन्स साइड, एंड मैट्रोन मीन मीनिंग। तो ये चीज कहाँ से आती है? these all three words that we studied in the last lecture। तो यहाँ पे दिया हुआ। ये लाइन थी जिसमें हमने ये पढ़ा था कि वो वर्ड कहाँ। उसके बाद हमने देखा था कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं। तो अगर एंगल एक की बात करेंगे यहाँ पे, देन देयर वर थ्री डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। दैट वाज साइन, कोसाइन, साइन, कोसाइन, टेन, जिनको हम साइन, कॉस और टेन भी बोलते हैं। तो अगर हम इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट में बात करेंगे एंड वी कंसीडर द एंगल ए। अगर ए की बात करेंगे तो क्या होगा? ऑपोजिट साइड इज सी बी और बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए सी और सी। तो इट वाज दिस। सिमिलरली इफ वी टॉक ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए, तो उसको क्या हम करेंगे? उसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज एडजेसेंट साइड क्या है? ए बी अपॉन ए सी, और ए बी अपॉन, दैट इज कॉस ए वाज ए बी अपॉन ए सी। और टेंजेंट के लिए हमने क्या किया था? दैट वाज ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, दैट इज बी सी अपॉन ए सी। ओके, so this is what we had studied in the previous lecture। ये बहुत ज़्यादा important है to remember these three forms, these three ratios। Basically, depending upon these three ratios, we can you can understand कि ये एक base है। It is a very foundation of the trigonometry। If you understand this correctly and if you apply it in subsequent uh, examples or subsequent topics or subsequent understandings, trigonometry will be just like a playfield। ठीक है, आपको कहीं भी इशू नहीं आने वाले अगर आप अभी अच्छे से समझ रहे हो इस चीज को। ओके, अब पहले हमने क्या किया था? एंगल ए लिया, दैट वाज दिस थिंग। नाउ जरूरी तो नहीं है कि एंगल ए ही लिया जाए, है ना। इफ एग्जामिनर आस्क्स अस टू टेक द रेफरेंस ऑफ एंगल सी, जो कि यहाँ पे है, in this case which will be the opposite side? AB will be the opposite side for angle C, and AC will be the hypotenuse and
BC will be adjacent side. So in this case, if we consider angle C, तो इसकी साइन एंगल क्या होगा? साइन C इक्वल क्या होगा? ऑपोजिट साइड दैट इज AB अपॉन AC. ओके, और cos एंगल C क्या होगा? इक्वल टू व्हाट इज एडजेसेंट साइड? ये दैट इज CB और BC और BC अपॉन AC. ओके, इसको थोड़ा क्लियरली और लिखता हूँ. दैट इज साइन एंगल A इक्वल टू, वी आर टेकिंग ऑफ C, so sin of angle C equal to opposite side, which is opposite side? AB upon what is hypotenuse? AC. Right? Now cos of angle C क्या होगा? Adjacent side CB upon what is hypotenuse? AC. That is cos. And what is tan of angle C? Equal to opposite side upon adjacent side. That is AB upon CB. So these three are the ratios. इतने तक हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. और उसके बाद देन वी हैड डिराइव कि व्हाट इज बेसिकली एंगल टेंजेंट ए. टेंजेंट ए इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ साइन एंड दैट इज tan एंगल ए, और फॉर एनी पर्पस tan एंगल सी इक्वल साइन एंगल सी अपॉन cos एंगल सी. tan ए क्या होता है? साइन एंगल ए अपॉन cos एंगल ए. जिस भी एंगल की बात करें वो tan क्या होगा? साइन अपॉन cos का डिवीजन होगा. ओके, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. अभी हम लोग नाउ वी विल स्टडी फर्दर. ओके, एक बॉक्स में आपके उसमें दिया पेज नंबर 176 में, द फर्स्ट यूज ऑफ आइडिया ऑफ साइन कब हुआ था? इट वाज इन द 8500, मतलब 500 years after anatomy. Okay. The first use of idea of sign the way we use today was in the work आर्यभट्ट by आर्यभट्ट. आर्यभट्ट ने जो लिखा था, जो बुक लिखी थी, उनको क्या बोलते हैं? आर्यभट्ट. In which year? 8500. Aryabhatta used the word ardhya, that is half, for which was shortened to Jya or Jiva in due. When Aryabhattam was translated into Arabic, the word Jiva was retained as it is, and it was the word Jiva was translated into sinus, which means curve. Sinus क्या होता है? That is curve. And the Arabic version was translated into Latin. Soon the word sinus also used as sign. उसके बाद उसका नाम क्या क्या हो गया?
sign, and that became common in mathematical text throughout Europe. इंग्लिश के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एडमंड गंट was alive from 1581 to 1626. First used the abbreviated form rotation time. ये आपके एनसीईआरटी की एग्जाम से कंसर्न नहीं है। हाउएवर, आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाओगे तो उसके लिए वन वर्ड ऑब्जेक्टिव या वन मार्क ऑब्जेक्टिव में पूछ पूछ दिस पर्टिकुलर एज अ क्वेश्चन हु यूज्ड साइन एज अ फर्स्ट, who termed it as a first abbreviation. The origin of the term cosine and tangent was much later. The cosine function rose from the need to compute the sine of complementary angle. मतलब देखो एक ट्राइंगल होता है, triangle if this is right angle triangle, so the sum of these two angles x and y, x plus y क्या होता है, that is 90. So that the sum of all three, that becomes 180, because sum of all the angles of triangle is 180. तो x तो हमें पता चल गया, सपोज ये x था या साइन का x किया, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, राइट, वो फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री वो फाइंड करने के लिए क्या किया हमने, वी मेड यूज ऑफ कोसाइन विच इज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू साइन। अब इसमें एक रिमार्क्स दिया है, सॉरी, before remark, origin of the term cosine and tangent was much later. Cosine function arose from the need to compute the sine of complementary angle. Aryabhatta called it कोटि। आर्यभट्टा जी ने क्या बोला था कि ये कोटि ज्यामिति, which we call as cosine in these days. The name cosinus originated with Edmund Gunter in 1674. The English mathematician Sir Jonas Murray first used the word abbreviated. फर्स्ट एब्रिवेटेड फॉर्म साइन किन्होंने यूज किया था, एडमंड गंट, एंड सर जोनास मूरे ने फर्स्ट क्या किया, एब्रिवेटेड फॉर्म यूज किया, कॉस। ओके, नोट दैट द सिंबल ऑफ साइन ए यूज्ड इन एब्रिवेटेड फॉर्म साइन ऑफ एंगल ए। हम जो साइन ए लिखते हैं, इट इज नॉट टुगेदर, sin A is divided into two parts. One is which function you are taking, and another is which angle you are taking as a reference. Okay? तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि इसको साइना नहीं पढ़ते कभी। ओके, एंड डोंट अंडरस्टैंड इट एज साइन ए, यू शुड ऑलवेज स्पीक इट लाइक साइन ऑफ एंगल ए। अगर आप ऐसा बोलोगे आपसे कभी गलती नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज यू विल ऑलवेज मेक इट क्लियर कि ए व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ और बी और वट एवर दैट, whichever the angle is given, you will take it as an angle and you will consider that angle to be a reference angle, and उसके जो सामने वाली साइड या एडजेसेंट साइड या ऑपोजिट साइड होगी, that you will use for your trigonometry function. Okay? ये चीज ध्यान में रखिए। Sin A is not a product of sin and A. Sin separated from A has no meaning. Similarly, cos A is not a product of cos and A. Similar interpretations follow the other trigonometric ratios as well. Now, if we take a point P on hypotenuse AC or point Q on AC extent, अभी क्या है कि अभी तक हमने सिर्फ इतने, now we will come to know और now we will analyze कि अगर इसको हम
then करते हैं, we go farther, what will be the effect of the angle and what will be the effect on the trigonometric ratio. Okay, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विल डू सम प्रैक्टिकल, हम लोग इसको और एक्सटेंड करेंगे, दैट पॉइंट पी, ए पी को पॉइंट पी एक्सटेंड करेंगे, क्यू एक्सटेंड करेंगे, और ए एम को पॉइंट बी एंड पॉइंट एन एक्सटेंड. These lines are perpendicular to PM, CB and QN. They are all parallel to each other. Okay. Now, if we take a point P on hypotenuse, that is this point, hypotenuse AC, or point Q on AC extend. ये hypotenuse पे AC extend. This is the Q point. The right angle ABC, कौन सा एंगल, ये इसकी बात कर रहे हैं, राइट एंगल ABC, इस एंगल, इस ट्राइंगल, right angle triangle ABC, and draw PM perpendicular to AB and QN perpendicular to AB. Extend PM perpendicular, एक छोटा कर दिया और एक उससे बड़ा कर दिया. Then we'll have both sides include. That is, हमने CB के एक लेफ्ट साइड में भी एग्जांपल ले लिया और एक राइट साइड में भी. Now we will check कि triangle PAM and ट्राइंगल CAB, इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज. ओके, तो हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था, क्या क्या चैप्टर 6 में पढ़ा था, थोड़ा रिकलेक्ट करो. वी स्टडीड द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल. अब सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड, व्हेन वी टेक द रेशियोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, दे आर दे कम टू बी सेम, और उनकी साइड के रेशियोज आर सेम. Therefore, the property of similar triangle, the corresponding sides of triangles are proportional. मतलब अगर इन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है, पी ए एम एंड सी ए बी, so what we can write, AM upon AB and equal to AP upon AC equal to MP upon BC, MP upon CB. ये तीन तीन चीज हम लिख सकते हैं बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी, based on proportionality of the triangle. Okay. Now coming to the next page. अब इससे हमारे को क्या पता चलता है, एम पी अपॉन ए पी, इसको यहाँ पे लेके आएंगे, दैट इज एम पी अपॉन ए पी, तो यहाँ पे लेके आए एम पी है. ओके, इक्वल टू क्या होगा, बी सी, देयर इज बी सी, बी सी को यहाँ पे लेते हैं और अपॉन ए सी, तो इन दोनों में क्या एंगल होगा, व्हाट इज एम पी अपॉन ए पी, एम पी फॉर एंगल ए अपॉन ए पी, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. तो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन एंगल, एंगल ऑफ ए, राइट. इसलिए इधर क्या लिखा हुआ है, एम पी अपॉन ए पी इज
Sine of angle A. Similarly, AM upon AP, AM upon AP equal to AB upon AC equal to cos A. Cos A क्या होता है? What is cos A? It is adjacent side of angle A. We are talking of angle A. ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। ए की एडजेसेंट साइड क्या होगा? ए एम अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू कॉस ए। ये चीज ध्यान रखनी है। इसके साथ नाउ टेन ए क्या होगा इसमें बताओ? चलो थिंक व्हाट विल बी टेन ए? क्या टेन क्या होगा ए के रिस्पेक्ट में? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। So anything you can write. CB upon CB upon AB equal to PM upon AM equal to QN upon AN. Whatever you think. So MP upon AM, MP upon AM, opposite side upon adjacent side equal to BC upon AB. That is opposite side upon adjacent side equal to 10 A. Okay. This shows that this shows the trigonometric ratio of angle A in PAM does not differ from those of angle A in PAB. In the same way, you should take the values of sine A and also of the other trigonometric ratios remain in QA. Basically, अभी क्या हुआ? देखो, पहले हमारे पास छोटा ट्राइंगल था, उसको बड़ा ट्राइंगल कर दिया, उसको और बड़ा कर दिया, उसको और बड़ा। बेसिकली रेशियोज सेम, ratios have remained same। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये लेंथ या ये है, ये हम लोग कितना भी बढ़ाते जाए, इफ वी टेक द रेशियो डिपेंडिंग अपॉन द एंगल और रेफरेंस एंगल, दैट विल रिमेन सेम, which makes lot of our calculations very easy in a practical life। ओके, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स देखे थे कुतुब मीनार के और रिवर वाला और पैराशूट वाला। From our observation, it is now clear that the value of the trigonometric ratios of the angle do not vary with the length of the side of the triangle if angle remains same. This is most important. If angle remains same, तभी ये चीजें applicable है। Okay, if angle is not same, then what will happen? Suppose मैंने ये एक with the same angle मैंने दूसरा triangle, same angle मैंने तीसरा triangle। Okay, now what will happen if I change the angle? यहाँ पे एंगल तीनों के लिए सेम, इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है और सेम। बट अगर मैं दूसरा ट्रायंगल बनाता हूँ जिसमें एक में ये एंगल है, एक में ये एंगल है, एक में ये एंगल, देन लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज is same, then there will be change in trigonometric ratios as well। क्यों? क्योंकि एवरी टाइम एंगल इज चेंजिंग, तो tan और sin एंगल A इक्वल टू विल बी समथिंग समथिंग। अब बढ़ा दिया
एंगल बढ़ा दिया तो साइन ऑफ एंगल ए प्लस बढ़ा हुआ एंगल थीटा अगर हम लेंगे दैट विल बी डिफरेंट। उसके बाद और एंगल इसको बढ़ा देंगे तो क्या होगा? अगेन देयर विल बी डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेट। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है? द थिंग टू रिमेंबर हियर फॉर यू इज this: value of trigonometric ratios of the angle of an angle do not vary with the length of the side of the angle. Triangle if angle remain if the angle there is change in angle there will be change in length of, okay, and there will be accordingly change of. इसके बाद की जो 2-4 लाइन दी है अभी वो आपके समझने के लिए जब टाइम आएगा तो आई विल एक्सप्लेन यू वेरी वेल। ओके, बट एज ऑफ नाउ वी विल रीड। For the sake of convenience we may write sin square a cos square a etc. in the form of sin a square cos a square etc. Respectively. But cosec a equal to sin a to the minus to the power minus 1 equal to sin inverse a। अभी आपका इनवर्स वाला फंक्शन नहीं आया है तो लेट अस नॉट अंडरस्टैंड इट नाउ, आई विल एक्सप्लेन यू वंस इट कम्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड sin inverse a। Sin inverse a has a different meaning which will be discussed in the higher classes. Similar convention hold for the other trigonometric ratios as well। Sometimes the Greek letter theta, जो हम एंगल को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं? थीटा, is also used to denote the angle। We have defined 6 trigonometric ratios। कौन कौन से थे? साइन, कॉस, tan, और 3 इनके इनवर्स। साइन का क्या था? कोसाइन। कॉस का क्या था? सेक। tan का था cot। तो ये थे 6 ratios of acute angle। ये भी ध्यान रखिए। If we know how many one of the ratios we can, if we know any one of the ratios, we can obtain the other ratios as well। अब कैसे कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? साइन है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉस। तो साइन से कॉस आ गया, या अगर कॉस है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दैट इज साइन, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉस है तो साइन की वैल्यू मिल जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट। If we know the sin and cos, then tan is a ratio of sin and cos, that tan equal to sin upon cos of angle, whatever angle we are taking। ओके, तो इन दोनों से tan का भी पता चल गया। और कोसाइन क्या है? इट इज इनवर्स ऑफ साइन। कॉस क्या है? सेक क्या है? इट इज इनवर्स ऑफ कॉस। एंड tan क्या है? कॉट क्या है? इट इज इनवर्स ऑफ tan। तो अगर एक भी रेशियो हमारे को पता है then we can find out the other ratios as well। Okay. We have defined six trigonometric ratios of an acute angle। If we know any one of the ratio, we can obtain the direct other ratio। अब ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे हमारे को एक ट्राइंगल दिया हुआ है, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल में हम लोग अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी साइन ए इज व्हाट? 1/3। अब वो कैसे होगा? एंगल ए है, व्हाट इज द ऑपोजिट साइड? दैट इज बी सी, दैट इज ए अपॉन व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? दैट इज ए सी, दैट इज सी के। तो अब क्या बच गया? 1/3। देन दिस मीन्स दैट बी सी अपॉन ए सी इज 1/3। कौन सा है? बी सी अपॉन
AC, that is opposite side upon hypotenuse, is 1 upon the length of side of BC and AC of the triangle ABC are in a ratio 1 is to 3. ये 1 के है, ये 3 के है, that is 1 is to 3 के रेशियो में है. Okay. So if BC is equal to K, then AC will be 3K. Here K is any positive number. To determine whether trigonometric ratios for angle A, we need to find the length of the third side, third side AB. Do you remember the Pythagoras theorem? क्या होता है Pythagoras theorem? The sum of the squares of two adjacent sides is equal to the square of the hypotenuse. Okay. In right angle triangle. Which kind of triangle? Right. यहाँ पे क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी. तो अभी व्हाट वी कैन डू इज ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ए बी क्या होगा? ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर. व्हाट इज ए सी स्क्वायर? 3K स्क्वायर माइनस इक्वल 9K स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो? 8K स्क्वायर. ए बी स्क्वायर कितना आ गया? ओके. हमारे पास क्या आ गया था? ए बी स्क्वायर इक्वल टू 8K स्क्वायर. अब रूट ले लेंगे. ए बी इक्वल टू 2√2 के. ओके. इसका रूट क्या होता है? 8 का रूट 2√2. अब कभी भी स्क्वायर से रूट की साइड जाओगे तो इट हैज टू बी प्लस, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1. तो अगर इसका स्क्वायर रूट लोगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा? प्लस माइनस. वी हैव टू कंसीडर बोथ द वैल्यू, दैट इज प्लस माइनस 1. तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वी विल टेक इट प्लस माइनस 2√2. ओके. तो ए बी क्या आ गया? ए बी इक्वल टू 2√2 के. और माइनस क्यों नहीं होगा यहाँ पे? वाई विल टेक ओनली प्लस वैल्यूज? बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ अ ट्राइंगल which is not imaginary one. Hence, the length cannot be in negative. Now, because A क्या होगा? Adjacent side upon hypotenuse. That is AB upon AC. AB upon AC. What is AB now? 2√2 upon what is AC? 3. 2√2 upon 3. That is cos A. अब इसके ऊपर से हमारे को tan निकालना है. तो tan कैसे निकाल सकते हैं? sin A is equal to 1/3. अभी प्रूव किया हमने यहाँ पे. cos A equal to 2√2/3. नाउ अभी हमें 10 लेना है तो क्या करना पड़ेगा? sin A अपॉन cos A. 3 कट गया इक्वल टू 1/2. 10 A कौन सा एंगल होगा? इसका 10 लेना है तो कैसे होगा? दिस अपॉन दिस. अब इसको दूसरी तरह से भी प्रूव कर सकते हैं. 10 A क्या होता है? ऑपोजिट साइड, दैट इज A अपॉन व्हाट इज एडजेसेंट साइड. हमने क्या फाइंड किया अभी? एडजेसेंट साइड AB क्या मिली हमें? 2√2 के मिली. 2√2 के. एक कट गया, एक कट गया.
क्या बच गया 1/2 जो कि यहाँ पे है। ओके। Similarly, we can obtain the trigonometric ratios of angle A. ओके। एंगल सी के लिए भी बोला हो तो कोई प्रॉब्लम है अब? यू कैन फाइंड। Remarks: since the hypotenuse is the longest side of a right angle triangle, the value of sin A or cos A is always less than 1. क्यों? क्यों ऑलवेज लेस देन 1 है? कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन में क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस में क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बड़ा है, ये छोटा है, तो ओवरऑल रेशियो क्या होगा? लेस देन 1। लेस देन 1। इसमें ये बड़ा है, ये छोटा है, तो रेशियो क्या होगा? लेस देन 1। Hence, the ratio of sin and cos is what? It is less than 1. Fine. यहाँ तक में कोई डाउट है? Tomorrow onwards we will be taking the exam. तब तक इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट कि एक बार हम जो पढ़ा है हमने क्लास में उसको एक बार गो थ्रू करके यू हैव टू मेमोराइज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की किसकी क्या चीज़ होती है। जैसे साइन होता है तो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, वो सारी चीज़ें आपको तब तक याद कर लेनी है अप टिल नेक्स्ट। ओके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड लर्निंग विथ मी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो बिंदास बिना सोच के आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यू विल गेट अ suitable reply as soon as possible. Okay. Thank you so much. Have a good night. Bye bye. Take care.